All right, ladies, a very, very good evening. Welcome to Forever Star India. I hope आप लोग सब ठीक हैं. I know there is a lot of excitement, curiosity of what is going to happen. And finally, we begin season 2022. So you guys are the official faces this year. And, it's an absolute delight to have you all here today. Thank you so much for taking out the time. I know आप लोग बहुत eagerly wait कर रहे थे for the trainings to start. But we wanted everything to be fine, perfect, and because now there is no looking back. आपके एक step की शुरुआत आपने auditions में कर ली थी, and now you start on your journey finally. Because I'm sure you are here with a motive, a purpose, and no matter you win or not, but the idea is to take away an experience of lifetime, which Forever Star India is going to definitely ensure. So I welcome you all with an open heart, and I'm sure it's going to be one fun journey that we track along the process. So re-emphasizing on the audition process, congratulations first of all on completing your auditions part successfully. And I remember the nervous faces, the excited faces that we all met, interacted with, but that is just a glimpse of what holds on to the future. Because वो सिर्फ आपके लिए एक शुरुआत थी. Of course, the hardest step, like we call it, because that was the first one. But now it's going to be very smooth, ensuring that you learn and you move ahead and grow and shine better. So talking about, Forever Star India, आप लोग इस फैमिली का हिस्सा बन चुके हो, इस कम्युनिटी की लाइफ टाइम मेंबरशिप आपको मिल चुकी है. And I am, going to re-emphasize and talk about the platform a bit so that you have clarity, what you are on to. So this is not just a beauty pageant. I know आप लोगों का final destination है to win the crown जितनी जल्दी हो सके. I should just win as many crowns as I can. But this platform is not just a beauty pageant. We call it a community of women who have successfully, cleared their auditions, and of course have made a mark on the jury members, re-emphasizing and clarifying that they are here with a purpose. They are like-minded, talented, and passionate. और आप सब में जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, there is that one common factor, the wish to create a unique identity for yourself. अपनी एक पहचान बनाने के लिए आप सब यहाँ पे हो, and that is why the team is all set to make sure that we groom you, train you in a way that you take away an identity for your lifetime, all sorted, and an experience of lifetime. So last year, Forever Star India season 2021 was, an inevitably beautiful experience because it was fortunately a huge success. Not just a success, but we created history by crowning 300 plus women from across the country. The finale was held at Marriott Hotel Jaipur, और हमने पहली बार ऐसा हुआ कि एक ही प्लेटफॉर्म पे 300 women crown किए गए on a single go, and they were all adorning couture outfits. Their makeup was done by celebrity makeup artists, and this year you guys are going to take the legacy forward because इस साल एक नया record set होगा और उस record के चेहरे आप लोग बनोगे. You guys are going to create another history this year because we are going to hit 750 plus crownings from across the country, and आप लोग 3 levels पे crown किए जाने वाले हो, city, state and nationals. Because let's be honest, सबसे पहला सपना हमारा होता है कि हम अपने शहर को represent कर पाए national level पे. Then it goes to state and then it goes to nationals, of course. And the community has a lot to offer. लेकिन इस बार का जो सबसे बड़ा benefit आप लोगों को मिलने वाला है, that you guys are going to directly get transferred on our exclusive application, the Forever Star India app, जो already Android पे active हो चुका है, and I'm sure you must have received your messages as well. This application is going to be a unique first time concept, क्योंकि पहली बार एक national community is going to come on board on a single platform where you guys as individual profiles अपने अपने talent के साथ अपना talent showcase कर पाओगे live to your audience from across the country, for that matter from across the world. So yes, application के through आपके auditions, आपके talent rounds और आपकी trainings live होने वाली हैं. So आपको सिर्फ कुछ चंद लोग नहीं बल्कि पूरी दुनिया देखने वाली है. आई एम श्योर आप लोगों के ऑडिशन वीडियोस यूट्यूब पे जा चुके हैं, आपने अपना फर्स्ट जर्नी जरूर देखा होगा, that how did I perform, and that feeling is aesthetic, it's great.
but to move forward and to be able to present your talent and showcase your skills to the entire of world for that matter, जहाँ पे आप directly experts के साथ networking कर पाओ, because let's be honest, this industry is nothing without the experts, nothing without the contacts. So जब आप safe secure experts के safe secure networks बनाते हो experts के साथ, फिर चाहे वो makeup artist हो, fashion designers हो, ramp walk experts हो, you get another level of security and sense of confidence in your own profile. ऐसा ही नहीं है कि ये सिर्फ वन साइडेड प्लेटफॉर्म होगा, इट्स गोइंग टू बी एन वन इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म, बिकॉज आई एम श्योर इफ यू have seen any of the applications, it will be both side active members, जो verified members होंगे हमारी community के, सिर्फ वही इस platform पे होंगे. तो safety का issue तो starting में ही resolve हो जाता है, because no unverified member will be available or will be able to access the app, because आप app को अपने personal login ID और password के साथ ही access कर पाओगे. And imagine जब आप अपनी ही field के expert से directly interact कर पाते हो, in the sense उनसे जो आपके मतलब कि टिप्स और ट्रिक्स हैं वो डायरेक्टली सीख पाते हो, प्लस उन तक अपना टैलेंट पहुंचा पाते हो. So that's something on another level, and that holds a validity and credibility of another level for that matter. Rest assured, let's get started with the process today, and I congratulate you all once again, welcome you all once again to your first ever training session. And now let me just invite the two leading ladies of Forever Star India, the directors. First, of course, is Miss Kirti Choudhary, the boss lady indeed, who's going to be talking about everything fun and frolic and your virtual presence as well. Second, I have with me, Jaya Chauhan, who is also going to be a guiding light for you all about talking about all the benefits that the future holds for you. So I think it's time for me to transfer the mic to Kirti ma'am. Kirti ma'am, welcome on board, and over to you. I'm sure the ladies are more than excited to hear it from you directly now. Thank you so much, Herry, for introducing me so beautifully, and thank you so much everyone for being here for your first ever session for winning Forever Miss India 2022. I can see some lovely faces across the screen, and I can see the excitement of being here for today's first training session. I'm sure Herry has talked a lot about the platform in detail, कि आप किस चीज का हिस्सा हो, आप किस community का हिस्सा हो. So all of you should be proud of where you are right now, because it is an amazing community which is going to help all of you, rather all of us who are a part of this community. So congratulations once again. And let me just tell you one thing, that virtual presence is one thing that we are going to talk about today. But why are we going to talk about virtual presence? Let me first explain that to you. Okay, so before we start with my content, I would like to understand that all of you are comfortable in English. If most of you are comfortable in English, you can just give me a thumbs up here. And if all of you are not comfortable, then I will keep it mixed in Hindi as well as English. Does that work for you, Hindi and English both? Perfect, perfect. So we'll keep it mixed ताकि किसी को भी problem ना face करनी पड़े content समझने में. तो अभी मैंने आपको बताया कि virtual presence के बारे में आज हम detail में बात करेंगे. तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं that why virtual presence? Because 90% of the process that we follow here on Forever Star India community, which includes your audition, it includes your participation, and then it has your training and grooming sessions. और training and grooming के बाद आपके talent rounds, यानी कि आपका audition भी virtual हुआ था, आपकी training and grooming भी virtual होगी, और आपके talent rounds भी virtual होंगे, which exactly tells you that 90% of the process is virtual. You have to show your personality, your traits, your talents, your presentation, everything virtually. इसलिए आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि virtually आपको खुद को कैसे एक सही तरीके से present करना है. That is why we are here today talking about virtual presence. Now, when I say talent rounds, ये talent rounds आपके 3 parts में होने वाले हैं. Talent round 1, talent round 2, and talent round 3. ये 3 क्यों है? हमने एक ही talent round क्यों नहीं रखा? Because we are going to give 3 chances to each one of you to prove yourselves. यानी कि इन 3 talent rounds से पहले
कोई भी इस शो से बाहर नहीं होगा। फर्स्ट टैलेंट राउंड में प्राइमरीली आपको अपने एस्पिरेशंस, क्यों आप इस प्लेटफॉर्म पे हैं, और अपने टैलेंट को प्रेजेंट करना पड़ेगा वर्चुअली। सेकंड टैलेंट राउंड में आपकी रैंप वॉक, आपकी मेकअप स्किल्स, आपका अटायर, आपका जो फुटवेयर है, ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी के बेसिस पे आपको जज किया जाएगा। एंड फाइनली आपकी रैंप वॉक, आपकी मेकअप और आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स पे आपको जज किया जाएगा। लेकिन रैंप वॉक मोस्टली हर राउंड में इंक्लूडेड हो, डरने की कोई बात नहीं है। अभी ग्रेजुअली आपको रैंप वॉक एक्सपर्ट भी ट्रेन करने वाला है, एक मेकअप आर्टिस्ट भी आपको ट्रेन करेगा कि खुद को कैसे प्रेजेंट करना है स्क्रीन पे। एंड वी विल ऑल्सो हैव एन इंटरनेशनली सर्टिफाइड इमेज कंसल्टेंट हु इज एक्चुअली गोइंग टू टेल यू कि वर्चुअली हम कैसे खुद को प्रेजेंट करने वाले हैं। सो टुडे इज योर फर्स्ट बेसिक सेशन अबाउट वर्चुअल प्रेजेंस। नाउ what is virtual presence? We'll start with here. आपको क्या लगता है कि जब आप ऑफलाइन कहीं पे खुद को प्रेजेंट करते हैं, then there are a lot of things that the jury members can see, but here virtually only in this box whatever you present, जो भी आप दिखाओगे वो jury members को दिखेगा। इस स्क्रीन से बाहर क्या हो रहा है उससे jury members को या आपकी ऑडियंस को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। So we are just going to concentrate on this box. Let me just tell you that if you are logging in from a phone, तो आपका जो स्क्रीन होगा वो वर्टिकल होगा। जैसे अभी आप देख सकते हैं दीपिका, वंदना, निहारिका, आपकी स्क्रीन वर्टिकल हैं। अगर आप मेरी स्क्रीन देखेंगे, आप हैरी की स्क्रीन देखेंगे या आप सृष्टि की स्क्रीन देखेंगे, तो आपकी जो स्क्रीन है वो पोर्ट्रेट मोड में है, हॉरिजॉन्टल आपको दिख रही होगी। तो जब आप लैपटॉप से या अपने डेस्कटॉप से लॉग इन करते हैं तो आपकी स्क्रीन इस तरीके से दिखाई देती है, और आप फोन से लॉग इन करते हैं तो आपकी स्क्रीन वर्टिकल दिखाई देती है। सो द फर्स्ट and the most important part about virtual presence is that how do you wish yourself to be perceived in front of the audience? Why would you talk about yourself? Why would you be giving your introduction? Because you want the audience to listen to you, because you want the audience to understand what you are saying. You have to first understand that how do you want to portray yourself? Do you want to come across as a very energetic person, or do you want to come across as a very calm person? Now that depends कि इस time period में आप खुद को कैसे show करते हो. So for example, if I tell you Herry Khosa जब बात करती हैं, so she comes across as a very energetic individual who's high on energy, right? She talks with very high energy. But if I talk about Jaya Chauhan, then she comes across as a very calm person. Yeah, that does not mean कि यहाँ पे कोई negative है. It only means that it depends on you, that how do you want to be perceived. You have to sustain your energy accordingly. अगर आप energetically बात करोगे उसके लिए आपको energy चाहिए. That means you should be eating well before your sessions. You should be eating well before your talent rounds. And as I always say, either eat a banana, eat almonds, or you can take dates. All those foods that give you instant energy, you can just take those foods and then you can appear for your talent rounds. वरना मोस्टली क्या होता है कि जब आप वॉक कर रहे हो, अपने बारे में बात कर रहे हो या अपना टैलेंट शो कर रहे हो, तो आपका एनर्जी लेवल बहुत ही लो लगता है। उससे पता चलता है कि आपकी प्रेजेंटेशन बहुत वीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आज हमने ये सीखा that we will be taking those foods before our sessions which give us instant energy. Secondly, आपकी स्क्रीन पे पोजीशन क्या होनी चाहिए? Make sure that whenever you are sitting across your screen, either from your laptop or your phone, there has to be maintained this gap of 1 or 2 inches from the top of your head to the top of your screen. I'm sure you understand. ये चीज सबको समझ में आ रही है? जैसे अभी मैं देख पा रही हूँ सृष्टि को आपके हेड के टॉप में और जो आपका टॉप है स्क्रीन का कोई गैप नहीं है। इससे क्या लगता है आप बहुत पास दिखते हो स्क्रीन के। Look at me now. Yes? Or look at me like this. कैसे लग रहा है? So there is this difference. फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा। इसमें मैं थोड़ी सी अजीब दिख रही हूँ, इसमें मैं थोड़ी सी बहुत ज्यादा पास से दिख रही हूँ. This will give you a more professional presence. इससे आप प्रोफेशनल लगते हो जब ये गैप 1 से 2 इंचेस के बीच में होता है from the top of your head to the top of your screen. So make sure कि ये गैप इतना ही रहे.
आप अपनी प्रेजेंटेशन या अपने टैलेंट राउंड से पहले इस प्रेपरेशन के साथ ही बैठेंगे अपनी स्क्रीन के आगे. सेकेंडली, आई विल टॉक अबाउट योर बैकग्राउंड. बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो बैकग्राउंड सिलेक्ट करते हैं, वी आर नॉट बीइंग वेरी माइंडफुल व्हाइल वी आर सिलेक्टिंग इट, लेकिन उसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट जाता है आपके ऑडियंस के सामने या आपके जूरी मेंबर्स के सामने. Either your background is very messy or very chaotic, or it is going to be very clean. आप एक प्लेन बैकग्राउंड सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है. यू कैन गो फॉर अ लाइटर कलर वॉल. जैसे मोस्टली अभी मैं देख रही हूँ तो आप सबकी वॉल्स प्लेन है, लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड केओस में है या आपका बैकग्राउंड मेसी है तो उससे 101% जो भी आपको देख रहा है उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा ही जाएगा. तो अपना बैकग्राउंड माइंडफुली आपको सिलेक्ट करना है. Now comes the most important part of your virtual presence, that is your body language. Body language is something that, the experts say that 65% of your communication is your body language. यानी कि आप कहीं भी प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आप कोई भी परफॉर्मेंस दे रहे हो, 65% जो इम्पैक्ट जा रहा है सामने वाले पे वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से जा रहा है. Now, what is your body language? Your body language comprises your face, your facial expressions. It comprises your eye contact. आप किस तरह का eye contact maintain कर रहे हैं? Facial expressions, if you're smiling or you're not smiling. Your hand gestures, your shoulder, your torso, your legs, your feet. But here, just because we are only talking about virtual presence, तो हम सिर्फ जो हमारा टॉप हाफ है उसकी बात करें. राइट? तो सबसे पहले आपको क्या दिखता है? माय आईज. यू कैन स्पॉट माय आईज. तो आईज, आई कांटेक्ट. अगर आप आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन करते हैं, दैट डायरेक्टली शोज यू आर नॉट कॉन्फिडेंट. दैट हैपेंस जब आप ऑफलाइन एक इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं या आप ऑफलाइन ऑडिशन देते हो तो क्या होता है, आप जूरी मेंबर की तरफ देखते हो. बट यहाँ पे just because the platform is virtual, how do you make sure that you are looking towards the audience or you are looking towards the jury member? So there is a camera on everyone's laptop or phone. तो टॉप पे जहां पे आपका कैमरा है उस कैमरा की तरफ ही हमेशा आपको फोकस करना है, आपको हमेशा उस कैमरा की तरफ देखना है. If you are making sure that you are looking towards your camera, you'll make sure that you are maintaining an eye contact with the audience. It is extremely, extremely important. अगर मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ और मैं यहाँ देख के बात करती हूँ कि आपको अपना बॉडी लैंग्वेज बहुत स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, how would you feel? You will not be able to feel a connect with me. वो कनेक्ट बनाने के लिए आई कॉन्टैक्ट बहुत जरूरी है. बहुत बार होता है हम कुछ पेपर्स अपने पास रखते हैं, राइट, या हम कहीं से कुछ देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट उस पर जाता है बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग समवेयर एल्स. तो ये नहीं करना है, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है, अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज. देन कम्स द फेशियल एक्सप्रेशन. Because right now we are 33 people in this meeting, right? So we get a feeling कि हमारी तरफ कौन देख रहा है, कौन हमें notice कर रहा है, but it is not so. It is a long, long journey. One person, two people, or three people are going to be there on this screen judging you every moment. So you have to make sure कि आपके facial expressions कभी भी negative ना हो. Negative ना हो उसके लिए आप क्या करेंगे? You have to keep smiling, right? अगर आप थोड़ा सा स्माइल करेंगे तो उससे एक पॉजिटिविटी रेडिएट होती है. एंड उससे एक चीज और होती है कि आप अगले मोमेंट के बारे में नहीं सोच रहे हो, राइट? जब आपका टैलेंट राउंड होगा तो आप क्या सोच रहे हो कि मेरी टर्न आने वाली है, मैं क्या करूंगी, कैसे करूंगी. सो इट डायरेक्टली शोज ऑन योर फेस. बट इफ यू आर कॉन्स्टेंटली स्माइलिंग, इट शोज यू आर स्टेइंग इन द मोमेंट. So try and stay in the moment and do not think about the very next moment what's going to happen, right? So ये हमारा eye contact हुआ. Then we talked about our facial expression, and then again the primary part of our body language is hand gestures. जैसा कि अभी आप काफी देर से देख रहे हो कि मैं अपने hands काफी ज्यादा यूज कर रही हूँ. तो ये जो hand gestures हैं ये आपकी प्रेजेंटेशन का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है. 80% आपके हैंड जेस्चर्स पे आपकी प्रेजेंटेशन डिपेंड करती है, राइट? मेक श्योर कि आप बहुत ज्यादा भी अपने हैंड्स को यूज ना करें विद अ लॉट ऑफ पावर. दैट आल्सो क्रिएट्स अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द ऑडियंस, राइट?
लेकिन एक बेसिक लेवल का जो आपका हैंड मूवमेंट है वो होना चाहिए. Also, let me just tell you that, you know, when you are giving a presentation or when you are talking about yourself, then the way you are using your hands can actually help the audience in understanding and retaining what you're trying to say, right? अब मैं आपको दो तरीके से बोल के दिखाती हूँ. Your hand gestures can actually help you or help the audience in understanding and retaining what you're saying. I'll say it in the second way. The way you are using your hands can actually help the audience in understanding and retaining what you're saying. So do you see the difference? कि एक बात मैं बिल्कुल स्टेबल होके बोल रही हूँ और मेरे फेशियल एक्सप्रेशन भी बिल्कुल न्यूट्रल है, but I have an expression on my face and I am also using my hands appropriately. तो उससे क्या होता है कि जो आपकी ऑडियंस है वो आपको समझ पाएगी अच्छे से, और समझने के साथ साथ जो भी आप बोलना चाह रहे हैं या बोल रहे हैं उसको रिटेन कर पाएगी, उसको याद रखेगी. और ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज आप यहाँ पे फॉरएवर मिस इंडिया 2022 के ऑडिशंस के लिए आए हैं. यू वांट द जूरी मेंबर्स टू रिमेंबर यू टिल द एंड. आप आगे तक कब जाओगे अगर आपके तीनों टैलेंट राउंड्स में स्कोर्स बहुत अच्छे होते हैं, राइट? प्लस आपका जो कॉन्डक्ट है इस पूरे टाइम पीरियड में 3 to 4 months में आपका जो कॉन्डक्ट है अगर वो बहुत स्ट्रांग होता है, आपका सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग होता है, तो आप एंड तक जाएंगे और ऑफलाइन जो क्राउनिंग होने वाली है उसके लिए आएंगे. इसीलिए मेक श्योर कि ये जो बेसिक पॉइंटर्स मैंने आपको बताए हैं, और जैसा कि मैंने हैंड जेस्चर्स की बात की, इससे एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी ऑडियंस पे जाता है एंड दे रिटेन यू इन अ बेटर मैनर. The final thing that I'm going to talk about today is your appearance, right? Now, appearance is taken negatively a lot of times, right? That, you know, I am not so fair, my hair is not so nice, or I do not have very nice dresses to wear, very nice shirts to wear. Then how can I look beautiful, or how can I, you know, look nice on this screen? So let me just tell you, looking nice is not about wearing beautiful clothes or wearing beautiful makeup. It's about just maintaining a tidy look on screen. आपका जो hair है वो बिल्कुल tidily done होना चाहिए, right? You can keep it straight, you can keep it in a bun, but chaos में नहीं होना चाहिए, right? And whatever you're wearing, make sure कि वो बिल्कुल casual नहीं. आप semi formals पहनिए, formals पहनिए, लेकिन उस प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग पहनिए. You cannot just get up and, you know, come across the screen. आप ऐसे नहीं आ सकते हो. आप एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन चुके हो, तो प्रोफेशनली ही आपको ड्रेसअप होना पड़ेगा. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट मेकअप, ऑल्दो टेक्निकली जो हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं वो आपके साथ नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन में इस बारे में बात करेंगे, बट मेकअप इज नॉट टू हाइड योर फ्लॉज, राइट? इट इज टू एनहांस यू, इट इज टू एनहांस योर personality, it is to enhance your features, which we are going to learn gradually in these sessions. एक basic nude makeup अगर आप करके आते हैं, whether you just use a lip pencil, you just use a kajal or an eyeliner, it just gives that finishing touch to your personality, right? क्योंकि एक दिन मैं आपको दिखाऊंगी, I'll just come blank, I will not be using anything on my face and my hair is going to look very untidy. उस दिन आप मेरी बात कितनी सुनोगे और आज आप मेरी बात कितनी सुनते हो, उसमें एक माइन्यूट सा डिफरेंस आ जाता है. या बिकॉज वी वांट people to look up to each one of you, that yes, she is a participant of Forever Miss India 2022, and look at her, look at the way she carries herself, look at the way she's walking down there, right? Look at the way she's wearing that dress. So that is what we are here to do. We are here to bring about a 360 degrees difference in your personality, so that where you're standing today and at the end of these 4 months, we want you to feel proud of your own self. We don't want you to compare yourself with any of the other contestants. Ye aaj se hi hame we have to make sure that we are not comparing ourselves with each other. Yeah, so I hope I made myself clear. I hope you remember all the pointers that we have discussed today, not in a lot of detail, लेकिन ये सिर्फ मुझे आपको एक ब्रीफ करना था ताकि आगे के सेशंस में आप वर्चुअली खुद को एक appropriate manner में present करें. So thank you so much, and I am looking forward to see you in the further sessions. Thank you.
Thank you so much, Kirti ma'am. Thank you. And I think माहौल थोड़ा serious हो गया. Everyone has taken, so many pointers. But the idea is this is the very basic of it. क्योंकि अब हम इसी बॉक्स में मिलने वाले हैं, तो इसी बॉक्स से ही सीखना है और इसी बॉक्स से ही सब समझना है. एंड ट्रस्ट मी, पर्सनल एक एडवाइस दे रही हूँ. आई हैव लर्न सो मच फ्रॉम द ट्रेनर्स दैट हैव बीन ऑन बोर्ड लास्ट ईयर. you learn. That is the only mentality that you need to come here with. आपको पहले कितना पता है, या आपके साथ वाले को कितना आता है, does not matter at all. You'd start from ABCD, and that's the only thing that you should be looking for. And I will get to grow with you guys. I'll get to learn from you guys as well. And I would just request all of you to keep on smiling and make sure that you leave an everlasting impression, because the cameras are on for most of the time. So now let's just talk about someone who is from you. तो आप लोगों में से ही आप लोगों के जैसी ही एक कैंडिडेट लास्ट ईयर हमारी नेशनल विनर से आज हम आपको मिलाते हैं. बिकॉज आई एम श्योर डायरेक्ट इंस्पिरेशन जब हमें मिलती है फ्रॉम अ पर्सन हु हैज ऑलरेडी बीन थ्रू योर प्रोसेस इज समथिंग डिफरेंट. इट हिट्स ऑन टू यू अनदर लेवल. So I take immense pleasure and pride in introducing our Miss India national level brand ambassador, Miss Namratanath, who took 3 crowns home. So not one, 3 crowns home. First as Miss Durgapur at city level, second as Miss West Bengal brand ambassador, and third she was crowned at the nationals as Miss India brand ambassador. So she had her journey, but who better than herself to talk about it and make sure she leave an inspiration and inspiring mark for you all. So I would request Namrata to come on the screen and hand over the mic to her. There she is with her stunning crown, जो आप लोगों के पास भी जल्द ही पहुंचने वाला है. I mean मिलने वाला है आप लोगों को. So that is your inspiration right there. Welcome on board, Namrata. It has been a long time. I hope you are doing good, and I would hand over the mic to you now. Thank you, Herry. Thank you so much, and everyone for having me in the show. Thank you, Kirti ma'am, Jaya ji, and everyone. It's a great pleasure meeting you all again. And yes, जैसे कि Herry ने मुझे introduce किया है already, I am introducing myself very proudly that I am Namratanath, the National Brand Ambassador of Forever Miss India 2021. And my journey started from the very first day of 2021, जबकि मैंने अपने हाथों से फॉर्म फिलअप किया था इसी शो के लिए, ये सोचते हुए कि मैं जीत पाऊंगी कि नहीं, क्या सीखूंगी, कैसे करूंगी, with all the doubts, with all the aspirations, dreams and everything. जब मैंने फॉर्म फिलअप किया, I got to know that this is one of the most women empowerment providing platform जो आपको इंडिया में सिर्फ ना कि अपने टैलेंट्स को सबके सामने दिखाने को मिलेगा, उसके साथ साथ आपको ऑनलाइन सबके सामने जब आप किसी भी चीज को गूगल में यू टाइप आउट, कोई भी फिल्म स्टार हो या कोई भी मॉडल हो, आप उसका नाम टाइप करते हो, आपको गूगल में देखने को मिलता है. Similarly, you will also get to see yourself on the Google. जस्ट आपको ये करना है, यू हैव टू फॉलो ऑल दी स्टेप्स जो आपको ट्रेनर्स आपको ग्रूमिंग सेशंस में सिखाएंगे. यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी डे वन. ऐसा नहीं दैट यू विल से आज सीख लिया तो कल स्टार्ट करेंगे, कल का क्लास हो गया तो उसके बाद नहीं, ऐसे नहीं होता है. आपको डे वन से चालू करना होगा, जैसे कि मैंने चालू किया था. आई फॉलोड एवरी सिंगल स्टेप एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली नर्वस बिल्कुल भी नहीं होना है. वी ऑल आर हियर टू विन एंड टू लर्न. मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप सबको ये दिमाग में रखना है कि आप यहाँ सीखने के लिए आए हैं. लाइफ में जीतना और हारना सब कुछ नहीं होता है, लेकिन हाँ, एक जीतने वाले के नजरियों से अगर आप सोचोगे तो आपको लाइफ में बहुत आगे जाने को मिलेगा. मैंने भी आप लोगों के जैसे एक जस्ट कैंडिडेट थी मैं when I filled up a form, and now I have this gorgeous crown just because of all the beautiful trainers, ma'am, and everybody supported me, saw the talent in me and helped me to come up in front because of this FSIA platform. So मैंने भी पहले, I'm from Durgapur and I have filled up the form introducing myself from the city. So सबसे पहले क्या होता है कि आपको बहुत सारी ट्रेनर्स मिलेंगे, जैसे कि आपकी हेल्थ कोच हो गई, who is going to help you to follow a particular diet, to follow a particular makeup pattern. आपको मेकअप आर्टिस्ट के साथ क्लासेस सेशंस मिलेंगे, ग्रूमिंग के लिए, आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कोचेस दिए जाएंगे. वो हर चीज जो आपको एक मॉडल बनने के लिए जरूरी है और आपको जानना है.
तो वो सारे क्लासेस को दिए जाएंगे। उसके बाद एक सिटी लेवल एग्जामिनेशन होगा, राउंड 3 में बटे हैं वो, जैसे कि आपको कीर्ति मैम ने बताया है। So you have to clear all the 3 rounds, prove yourself that you're worthy to be in the state, and once you clear your state, आपको और भी बहुत सारे training sessions दिए जाएंगे, followed by the examination round, जिसमें the most talented and the deserving of you all will definitely get to see and get the precious crown and the sash. That is it from my end. I hope कि आप सब you get to learn, आप जिस लिए यहाँ पे हो वो आप सीखो और उससे अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर सको। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, नेवर फॉरगेट दैट ब्यूटी विद द ब्रेन, ब्यूटी विद द पर्पस is what defines the femininity and the women empowerment crown. That is my message to all of you. Thank you. Thank you so much, Namrata. Thank you. It was lovely having you back here. Now that's our FCA family that we represent. And you guys are going to become the legacy for this year, season 2022. So I'm sure आप लोगों ने already अपने आप को crown के साथ imagine कर लिया होगा. अगर नहीं किया है, so take some time, imagine yourself in a couture gown and walking the, ramp with that crown for that matter. So now let's, re-emphasize and remind you of the benefits that the platform has to offer. Who better than Jaya Chauhan to talk about it and put some light onto it, the strongest core team member of Forever Star India. Jaya, over to you. Thank you, Herry. And all of you, I think आप लोग हमारे को एक national winner से मिल लिए हो. So you might have gotten some inspiration. And happiness तो मुझे आपके चेहरे पे दिख ही रही है. So let's talk about आपका participation process जो आपने थोड़ा complete कर लिया है. There are a lot of added benefits जो इसमें process में जुड़े हुए हैं. I think आप लोगों को काफी clarity है already. During the audition process also आपको काफी benefits की details बताई गई है. But I'll just clear it again to, refresh your memories. But before that, I would request all of you to please switch on your videos because I want to see all the faces. यही faces जो है, ये आगे jury भी note down कर रही है. There are a lot of big boss eye, you can say, third eye. They are noticing you. और इसी तरीके से आपका जजमेंट हर एक सेशन में होने वाला है. सो मेक श्योर, जैसे कीर्ति मैम ने आपको बताया, दैट वर्चुअल प्रेजेंटेशन इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ मार्किंग इन दिस शो. सो मेक श्योर आप इन सब चीजों को ध्यान रखें. एंड लेट्स टॉक अबाउट द पार्टिसिपेशन बेनिफिट्स नाउ. जैसे कि आपको ऑडिशन प्रोसेस में भी क्लियर किया गया था दैट यू आर गोइंग टू बी अ लाइफ टाइम मेंबर. इस स्क्रीन पे जितने भी लोग हैं, ऑल ऑफ यू आर द लाइफ टाइम मेंबर ऑफ फॉरएवर स्टार इंडिया. इफ यू सर्च योर प्रोफाइल्स ऑन कम्युनिटी मेंबर्स, आपको अपना प्रोफाइल वहां पे लाइव दिखेगा. ये प्रोफाइल जो लाइव है, दैट इज नॉट जस्ट फॉर दिस ईयर, दिस इज फॉर एवरी अपकमिंग ईयर. That's how you get a lifetime membership. For every upcoming projects, we are going to, talk to you people, not going out of the industry. This is the community we are building, जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स, इवन द बेनिफिट्स जो आगे प्रोजेक्ट्स में आने वाले हैं, वो हम आपके साथ में शेयर करते हैं. That's how the lifetime membership works. Secondly, let's talk about the main and the very unique benefits, which is Google ranking. I think बहुत सारे लोगों को मैंने ऑडिशन में भी क्लियर किया, Google ranking is something which is a unique concept itself. जैसे कि आप नम्रतानाथ है, यू सर्च हर प्रोफाइल ओवर गूगल, आपको गूगल पे उनकी प्रोफाइल्स रैंक करती हुई दिखेगी. फॉर सम ऑफ यू 15-20 डेज में आप लोगों की प्रोफाइल भी गूगल पे रैंक करती हुई दिखेगी, बट ओनली एट वन केस. जैसा कि आप लोगों को पहले भी बताया गया है, फॉरएवर स्टार इंडिया पे आपकी जो प्रोफाइल्स अपग्रेडेड है, उनको आपको अपडेट करना है. ये अपडेशंस के बेसिस पे ही there are some technical terms which we use, and ये profiles जो है वो Google पे rank करती है. और Google पे नाम किसे नहीं चाहिए, which Herry always says, Google कर लो मेरा नाम, मेरा काम दिख जाएगा. You search Kirti ma'am's name, you search Herry's name, even the winner's name. There are a lot of winners which I have, I have the names. आप अभी भी Google करेंगे, you'll see the profiles ranking over Google. So this provides you a lot of, benefit in the professional term as well. Apart from this show also, you are going to get a lot of benefits with the different sectors too, with the Google ranking process. There are added benefits like the hard copy certificate and sash, which are very beautifully designed, and soon they are going to be at your doorstep. So if there are any formalities pending, make sure you connect with your account manager, and then
we are going to send you a beautifully designed hard copy certificate and the sash. Then what happens? आज आपका पहला सेशन है, ये बेनिफिट्स आपको स्टेप बाय स्टेप मिल ही रहे हैं, बट ट्रेनिंग एंड ग्रूमिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि आपको एक विनर के प्रोसेस पे लेके जाने वाला है. सो ट्रेनिंग जो है आपका आज ये फर्स्ट स्टेप है. आपको आगे आने वाले ट्रेनर्स who will be a lot of image consultants, there will be trainers who will be guiding for the ramp walk, for the makeup. You do not have to miss out on any training session. Firstly, whenever you receive even a link or a text, do revert with the team, connect with the team, and check with the availabilities. So sessions jo hai, these sessions are going to help you in becoming the better version of yourself. आज कुछ लोगों के videos है जो already YouTube पे available है audition के. Once you see the transformation, by grooming yourself, by training yourself, and first of all, taking it seriously. And also throughout the process, इसमें आपको अपने खुद के जो efforts हैं, not just in this virtual screen, apart from that, आपको social media पे भी अपनी activities जो है show करनी है, because it's provide you marking. Because when you are active on the social media, there are a lot of jury members जो आपको social media पे मिलेंगे. You're going to tag with the activities on Forever Star India. आपकी stories repost होती है. That's how people get to know आप कितने active हो social media पे, and आपकी जो daily activities है, whether you are making a reel or doing a photo shoot or making a makeup video or whatever it is. But आप जब अपनी activities daily social media पे Forever Star India के साथ में share करते हो, that shows the effort. ये effort जो है, that is going to give you a lot of marking through the jury also. So that's how the process will be for the social media profiles. इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, because आगे जाके definitely आप लोगों में से कुछ लोग जो city winners बनेंगे, state winners बनेंगे, national winners बनेंगे. People will Google your name, definitely जो आपने profiles update करी है. Apart from that, they will see your social media handles. So आपको अपना social media handle उतना strong अभी से बना के रखना है, that you have the mindset कि मैं winner बनने वाली हूँ, so मुझे अपना social media best to best set करके रखना है. So daily social media activities जो है वो आप अपनी complete कीजिए, and profiles जो है वो public account अब आपको maintain करना है, because private account पे who is going to see कि ये winner है और इनकी तो profile में ही हमें कुछ नहीं दिख रहा है. So that has that is something which you do not have to do. आपकी पब्लिक अकाउंट होने चाहिए, एंड पोस्ट में आप Forever Star India को टैग करते हो. That's how the process will be on the social media activities. Now the final journey, what happens after this training and grooming, जो कि कीर्ति मैम ने आपको already बहुत अच्छे से describe किया है. But again, I'll re-emphasize on this thing that आपकी जो crowning होने वाली है, we all are going to meet out of this box in Hotel Marriott Jaipur, Rajasthan for your city and states crowning, where you will be wearing the beautiful gowns, the crown and the makeup, and everything will be taken care by Forever Star India. It's just you have to give a lot of efforts and hard work, which will go through the talent rounds, and you will be coming in the session the ceremony here. So ceremony जो है city and state winner की एक साथ में होगी in the month of September, जहाँ पे आपकी crowning Hotel Marriott जयपुर में होने वाली है. And the selected state winners will be coming again for the national winners crowning in the month of December. So that's how the process is. आपने already सुन लिया होगा 300 winners we are going to we have crowned last year. So this year we are going to crown more than 500 to 700 winners this year. So आप please try कीजिए कि put a lot of hard work and efforts, which I would say, and then you are going to be there in the finale. So all the very best from my side. I just want to see a lot of excitement for the every upcoming session. Thank you so much, and over to you, Herry. Thank you so much, Jaya. Thank you. So these were the lovely leading ladies of Forever Star India, जिनके साथ आज I introduced you. And of course, this is the first introduction session that we planned, and we were planning to, because now, of course, official trainers will be taking on in the upcoming sessions. And let's just talk more about what the app holds on to. Because I'm sure website से ज़्यादा preferable आपके लिए भी एक app का format रहेगा. Everything today is on an app, be it food delivery, be it home shopping, every single thing.
So having everything on a single app, which you can access more easily, because I'm sure काफी लोगों को website access करने में कभी कभी थोड़ा fluctuations आता है, but app will be much more lighter and easier to access, because you will not have to switch spaces and links across, for that matter. And having said that, जब आप एक ही field से belong करते हो and you have a lifetime membership involved, there are so many chances to get in touch with professionals and your co-participants as well, who fit into your criteria of expertise and make sure you leave an impressionable mark. जैसे we regularly put pictures of ours on social media जो best होती हैं, but we're not very comfortable because हमें पता है कि यहाँ पे too many people can see who are not something that we would want to show our interest on. बट इमेजिन जब आप एक ऐसे ऐप पे आ जाते हो, एक ऐसे स्पेस पे आ जाते हो जो ए बहुत सिक्योर है, being with only verified members from the community, and secondly is also very very beneficial because जो लोग आपकी community में connected हैं, आपके interest से connected हैं, आप उन्हीं को directly अपना content दिखा रहे हो और उन्हीं का content consume कर रहे हो. There is no confusion, there is no hassle of too much content, because I'm sure everybody wants to know more about their trainers and who they are getting in touch with and learn more tips and tricks. Eventually जो training session है वो 30 minutes 40 minutes में खत्म हो जाया करेगा, but what after that, how to get to know more, because there is this always urge कि काश ये 10 मिनट और हो जाता तो हमें कुछ और भी पता चल जाता. There's this endless urge, I'm sure everybody is smiling on the screen, so there is this endless urge कि कुछ और भी पता चल जाता तो it would have been so much fun. So that is where this app comes into the picture, because eventually you get a format where there is only content that you need and you should consume for your improvement, because यहाँ पे there's no unnecessary content that you won't have any benefit out of, plus you have the opportunity to showcase some of your talents directly, because I'm sure बहुत कुछ अभी hidden है आपकी personalities में जो शायद आपको खुद को भी नहीं पता है, and I'm not kidding. Trust me, when the trainers will come on board and they will ask you to do certain short skits or tests or homeworks, you will realize आपके खुद के अंदर कितना potential है, because जब हमें एक सही राह मिलती है तो हम खुद को भी we do not feel uncomfortable trying. आप घर पे कितनी बार अपने घर वालों के सामने रैंप वॉक किए होंगे, but auditions में सबने किया, चाहे आपके भाई लोग पीछे हंस ही रहे हो, but still we tried, we took that first step, because you feel comfortable and confident जब सामने वाला आपके उस talent को appreciate करता है, notice करता है. Hardly that's the problem we all face, that हम जितना भी try कर लें, there is nobody to understand what we are trying to do, because हमारा platform बहुत different है, हमारे interests बहुत different है. And let's be honest, glamour industry is not very positively associated to much positive concept. Usually there is so much negativity. But when you see all women who are ready to accept you the way they are and the way you are, you do not think twice. In fact, काफी लोगों के auditions में introductions 3-4 minutes तक लंबे चले थे, because you were so happy to talk about yourself. And this is the platform that we have to offer. This is the space we will be creating through the app. So make sure, as soon as you start receiving your links through the messages, you download the app and, you start exploring every single thing of the app and start knowing it more. Till then, of course, keep your profiles updated as well. So, that would be all about the app and about the platform today. So that is, I would now take leave from Jaya and Kirti ma'am to talk about, some other formalities. So thank you so much, ladies, for being here.